angry protests over the Agnipath scheme. It rages on now in Haryana. Dramatic shots coming in from the Palwal area in Haryana. Protesters have burned down police vehicle in Palwal. Police resort to lathi charge as well. Here's some more visual coming in. Let's cut across to those dramatic shots coming in from Palwal in Haryana, where protesters are now condemning the Agnipath scheme. Even in Haryana, similar protests have now erupted. This is Haryana's Palwal, where we see a police vehicle that's been burned down as protesters are angry with the Agnipath scheme that the government has rolled out. Remember, the BJP, of course, endorsing this as a welcome move, as historic. Yes, indeed, a similar formula has been adopted by a few other countries in the world. But does this suit India at this point? India is looking at large-scale unemployment as well. A large number of youths at the same time also apply for the army, considering job security. And many of those youth, largely hailing from Bihar, Haryana and these areas, many of them are very upset that now, because of a 4-year contract and no pension, their future will remain insecure. They're fearing insecurity in their job. Ankur joining us live for more on this. Dev, Ankur, what is the grouse of those youth in Haryana, Palwal, who are protesting violently? They burned down a police vehicle there. Dev, Ankur, if you can hear me. Nabila, can you hear me? Yes, please go on. What's the grouse of those youth in Haryana? Rajasthan, well, right now there are widespread protests which have been happening in various parts of the country. I'm in Jaipur right now, and even in Jaipur there have been strident voices against the government bringing in Agnipath scheme. Firstly, they say that, you know, if 75% of those people who would be taken in, they will be asked to leave after 4 years, then what will happen to those skilled youth? They also say that once you attain skills over a period of certain, let's say, 3 to 4 years, then you are expecting to get promoted, or you expect to get a higher pay grade. But out here, the government is saying that 75% of the people will be made redundant or will be asked to leave the army. So what will happen to them? Will they be serving as peons, drivers, house staff, or in other jobs which they feel that they are much more equipped than that? So I have several people with me right now. He's an ex-serviceman. Sir, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एक्स-सर्विसमैन हवलदार ओपी चौधरी है। चौधरी जी, ये बताएं कि जो सरकार अग्निपथ की जो स्कीम लाने की बात कर रही है, 4 साल की सर्विस, वो कह रहे हैं कि इससे रोजगार मिलेगा। क्या आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जो ट्रेनिंग करेगा, उस ट्रेनिंग से हम हमारे विरोधी देश जो बॉर्डर लाइन है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने आर्मी की सेवा करके बिल्कुल बॉर्डर लाइन को देखा है, और मैंने करीबी से इस युद्ध को देखा, 99 कारगिल को भी देखा है, और मैं इस योजना का बिल्कुल खंडन करता हूं, और ये सैनिकों के बिल्कुल खिलाफ है। आपको मालूम है कि इसके बारे में कि ये बिल्कुल किसान का बच्चा फौज में जाता है, किसी नेता का बच्चा कोई आज तक फौज में हो, या नेता का बच्चा ओनली फॉर 1 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे, हम बिल्कुल। आप कह रहे थे आप डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, आप सर्व भी कर चुके हैं? नहीं, सर्व नहीं कर जी। तो ये बताएं कि जो स्कीम है उसके तहत अगर सरकार कह रही है कि एक व्यापक स्तर पर लोगों को सेना में भर्ती करने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, देश को सर्व करने का मौका मिलेगा, तो आपको डिसएग्रीमेंट कहाँ पे है? सर, कहाँ से ये सर्व कहाँ से करेंगे? मुझे ये बताइए। 4 साल की सर्विस है जिसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। 4 साल बाद में वो बच्चा ओनली फॉर हथियार चलाना सीखेगा, और बाहर आके उसके पास में कोई रोजगार तो रहेगा नहीं, फिर वो क्या करेगा? कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा, ठीक है। या बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम इस चीज में उसको रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, कहां से देंगे? 75% लोग, 75% बच्चे बाहर जाएंगे, 75% एसएससी डिपार्टमेंट को कहां देंगे वो? इसके अलावा जो आप एक बात कर रहे थे कि पिछले 2 साल में पैंडेमिक के दौरान जो भर्तियां होनी थी, जो नहीं हुई, रुकी हुई थी, कि कहकर के कोविड पैंडेमिक चल रहा है, आप उन सभी भर्तियों पे आप कह रहे थे रोक लग गई है, उसको लेकर काफी आक्रोश है। सर, कोविड का तो अभी भी यही कोविड डला हुआ है कि कोविड, सरकार ने ये कहा कि अभी कोविड है, कोविड के बाद में एग्जाम रिटर्न की डेट भी दी जाएगी, फिजिकल भी कराया जाएगा, मगर अचानक ये प्रस्ताव सरकार लेके आती है कि सभी एग्जाम रद्द किए जा रहे हैं, टीओडी लागू की जा रही है, टीओडी के माध्यम से ही ये भर्ती की जाएगी। तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? ये एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह बन चुकी है बीजेपी सरकार। पहले किसान अड़े रहे, किसानों ने कम से कम 1 साल तक वहां पे धरना दिया, उसके बाद में बीजेपी सरकार ने वापस वो नियम वापस लिए, और आज बीजेपी सरकार
इन बच्चों पे अत्याचार कर रही है, तानाशाह कर रही है। ये कहाँ ये चीजें करेगी, किन किन को मारेगी ये। और 42 लड़के सुसाइड कर चुके हैं। बीजेपी सरकार आगे भी सुसाइड और देखने को मिलेंगे। क्यों ये इनको बच्चों को इतना मारना चाह रही है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि आप जो इन बच्चों का एग्जाम नहीं करा रहे हो, आप ये बताइए 21 साल आपने एज रखी है, ये बच्चे तो ऑलरेडी ऑरेंज हो गए, उनको कहाँ से रोजगार बताइए? जो टीओडी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है अग्निपथ के तहत रिलैक्सेशन दे दी जाती है, फिर क्या आप उससे सहमत हो जाएंगे? अगर एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो भी हमें कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन जो 4 ईयर के बाद रिटायर्ड होने के बाद कोई रोजगार उनको नहीं मिलेगा और ना हमको मिला है। हम भी एक्सर्विसमैन हैं, आज यहाँ दर की ठोकरें खा रहे हैं। Well, so clearly there are several problematic areas in this Agnipath concept. Firstly, Nabila, the point is that why were these youth, not just hundreds of them, thousands or lakhs, but there are lakhs of such youth who are today out on streets, why were they not taken into confidence? Why was the plan to float such a scheme not brought into public sphere and asked for opinions? They claim that the government is acting in a dictatorial manner, that they are imposing this Agnipath scheme on them, and there are several insinuations that are being leveled on the Modi government, where several of the youth are claiming that to reduce the budget, not to give pension, and that is what the main focus of the Modi government is behind bringing in this scheme. And they claim that those students who had been preparing for the last 3 or 4 years during the COVID pandemic, when the recruitments were not happening in the army, what will happen to several of them, in fact thousands of them who have already gone over age and who were expecting that the recruitments will allow them to pursue their passion of serving the country and being a part of the army.